energy devices, parts for their manufacture, such as biogas plant, windmills, wind-operated electricity generator, waste-to-energy plants, devices, PV cells, whether or not assembled in modules or made up in panel, solar cookers, solar water heaters and systems, and so on. Should I stop there and leave you all to ask questions? Just want to highlight the last one, that there is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods, including aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter, or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages, or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. So I think I have covered most of it. One last point on the RSP. GST will be levied on retail price, which is the RSP, instead of transaction value on pan masala, gutka, cigarettes and other tobacco products such as zarda, scented tobacco, unmanufactured tobacco and chewing tobacco. Again, one other point which I will conclude with. Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizen, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. I think I'll leave it there. We'll answer questions. Thank you, ma'am. Now we move on to the question and answer session. There's one more. Sorry, I'm getting tempted to say one last thing. There are 4 points which I want you all to take into consideration. All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navaratri. The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable till the loan and interest payment obligations
under the compensation cess account are completely discharged. I hope I'm clear. Every item will come under the new rate from 22nd September, except for these tobacco-related products, which will continue on the 28% and compensation cess where applicable, till such a time we completely repay the loan. Based on this decision of this set of tobacco products continuing till some time, based on that decision, the Union Finance Minister and the Chairperson of the GST Council is actually authorized to decide on the actual date of transition for these tobacco-related products as soon as the loan and interest is cleared. Yeah, please. Thank you, ma'am. Before we start the question answer session, please introduce yourself before asking the question. Also speak into the mic because this is being live streamed, and also raise the placard. We will take the questions one by one. So, number 9. Ma'am, this is Priyansh from Money Control. I wanted to ask what is the possible revenue loss that has been estimated due to the rate cuts? And secondly, for the states, has there been any discussion on how the revenue will be compensated to them? As Finance Minister explained, the objective of this proposal, which is the GST rate structure rationalization, accompanied with process reforms. So the first request I will have is to have the appreciation of the proposal in the manner in which it has been prepared, in order to not distract ourselves with issues which will be an outcome of this process, but the core principle of this exercise needs to be appreciated in totality. We have estimated a figure. We expect that the net fiscal implication, we would not call it as a revenue loss because that doesn't seem to be the correct terminology. But net revenue implication of this proposal is expected, we have estimated it to be around 48,000 crores. This is on the consumption base of 23-24 because that is where we had all the segregated data. What I would also request is to have to appreciate this exercise better. It's important to also understand why looking at a particular number of revenue implication and highlighting it in a manner which is not proper may not present the correct picture of this exercise. GST परिषद बैठक नि बड़ निष्पत्ति सेप्टेम्बर 22 तारिख अनेक द्रव्य अनेक पदार्थर दाम कमिवाई जाउछि कारण पूर्वर प्रचलित 12% एवं 28% स्लाब को उच्छेद करिसेंती केंद्र सरकार 22 तारिख नुआ स्लाब अर्थात 5%, 18% एवं 40% स्लाब कार्यकारी हेब। तेणु जो सब द्रव्य एवं पदार्थ 12% एवं 28% रे रहिथिला एवं जनतांकर आवश्यकता से सब द्रव्य एवं पदार्थ को प्रायतः 5% किंबा ता उपरु शून्य जीएसटी कार्यकारी करिवे केंद्र सरकार। तेणु आसंता 22 तारिख अनेक द्रव्य अनेक पदार्थर दाम कमिवा पई जाउछि। वर्तमान समय दरदाम को नहीं अनेक चर्चा हेउथिला एवं केंद्र सरकार दरदाम को नियंत्रण करने क्षेत्र में बहुत बड़ पदक्षेप नहीं। जीएसटी परिषद बैठक में आज नि किछि बड़ निष्पत्ति क्यों सबू द्रव्य पदार्थर दाम कमिबो ताहा आमे आपनकु टीवी स्क्रीन रे देखाइबा पई चेष्टा करूछु। जेमिति 33टी जीवन रक्षाकारी औषधर दाम कमिबा पई जाउछि। चमड़ा ग्रानाइट उपरु जीएसटी कमुछि तेणु यार मध्य दाम कमिबो। सेहि भली हेयर ऑयल शैम्पो उपरे 5% जीएसटी लागिबो जहाँ पूर्वरु 18% लागुथिला। तेणु एथिरे मध्य लोके किछिटा आश्वस्ति पाइबे। सेहि भली छेना पनीर क्षीर पाउडर ए सबु जीएसटी मुक्त हेबा पई जाउछि आसंता 22 तारिख रु। नूडल्स नमकीन मिनेराल ए सबु उपरे मध्य जीएसटी कमुथिबारु एहार मध्य दाम कमिबो। सेहि भली 1200 सीसी पर्यंत गाड़ी उपरे मध्य जीएसटी कमुछि। तेणु एहार मध्य रेट बा दाम कमिबा पई जाउछि। आसंता 22 तारिख भारतीयଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ गुरुत्वपूर्ण दिन कारण नवरात्र आरंभ होइथाय। कोटी कोटी लोक एही दिन को अपेक्षा करिथांती एवं सेही दिन ठारू नुआ जीएसटी स्लैब कार्यकारी हेबा पई जाउछि। पूर्वरु 4टी जीएसटी स्लैब कार्यकारी हेउथिला अर्थात 12%, 28%, 5% एवं 18%। ता भितरु 2टी जीएसटी स्लैब
12% এবং 28% को केंद्र सरकार उच्छेद करिसंती एवं नुआ भावरे 40% जीएसटी स्लैब लागू हेबो एवं ए 40% जीएसटी स्लैब भितरे साधारणतः तंबाकू जातीय द्रव्य तंबाकू जातीय पदार्थ गुटखा सिगारेट ए सबु जाउछु तेणु एहार दाम 22 तारीख पर बढ़ुची एथिरे कोनोसी प्रकार द्वंद्व नाही सेहि भली जो सबु खाद्य सामग्री रहिथिला एवं जनसाधारणकर आवश्यकता बिस्कुट हो चा हो अमूल हो बा ए सबु द्रव्य एवं पदार्थ ता उपरे जीएसटी रे परिवर्तन करा जाउची जो सबु द्रव्य एवं पदार्थ 18% जीएसटी स्लैब रे थिला लोकंकर अत्यावश्यक सामग्री से सबु को वर्तमान 5% एवं किछिटी द्रव्य उपरु 0% जीएसटी अर्थात कोनोसी जीएसटी निया जीवो नाही तेणु 22 तारीख पर देश रे अनेक द्रव्य एवं पदार्थ रे दाम कमिबा पई जाउची जहा साधारण खाउटी को निश्चय सुहाइबो एवं लंबा समय धरी भारत रे ए चर्चा चलीथिला कि दरदाम उपरे केमिति नियंत्रण लागिबो दरदाम केमिति अंकुश लागिबो ताकू नजर रखी केंद्र सरकार मध्य लगातार भाव में योजना करि आसुथिले एवं प्रधानमंत्री अगस्त 15 तारीख दिन घोषणा करथिले कि जीएसटी रे स्लैब परिवर्तन हेबा पई जाउची से दिन ठारू आभास मिली जाइथिला कि सरकार बड़ परिवर्तन करबा पई जाउचंती एवं दरदाम किछिटा नियंत्रण को आसीबो बा अनेक पदार्थ द्रव्य उपरु दर कमिबा पई जाउची एवं आज जीएसटी परिषद रो बैठक बसिथिला एवं एई बैठक उपरे समस्तंकर नजर रहिथिला कारण एई बैठक रु देशवासी पई खुशी खबर आसीबो ए कथा समस्तंकु जणाथिला एवं वर्तमान अर्थमंत्री ए संक्रांत रे घोषणा करिसंती केउ द्रव्य पदार्थर दाम कमिबो कहा उपरे जीएसटी कमा जाइछि तार चित्र आमे आपण माननकु देखाउछु जेमिति कि नूडल्स एवं अनेक खाद्य जातीय द्रव्य ता उपरे जीएसटी कमुछि तेणु यार दाम मध्य कमिबो एवं जीएसटी प्रतिशत जेतेबेले खसुछि जणे क्रेता बा जी किणुचंती उपभोक्ता से मध्य कम दाम रे पाइबे से भली चमड़ा एवं ग्रानाइट को नहीं मध्य अनेक चर्चा होउथिला ए क्षेत्र रे मध्य जीएसटी कमुछि तेणु चमड़ा एवं ग्रानाइट उत्पाद द्रव्य उपरे मध्य किछिटा दाम कमिबो यह जनसाधारण को निश्चय आश्वस्ति देवता सहित व्यवसाय को मध्य प्रोत्साहन देबो ए आशा करा जाई पारे छेना पनीर क्षीर पाउडर ए सबु उपरे मध्य जीएसटी मुक्त हेबो तेणु ए सबु द्रव्यर दाम जहाँ थिला वर्तमान 22 तारीख पर एथिरे खसिबो कोनोसी द्वंद्व नाही कारण केंद्र सरकार एभली किछि बड़ पदक्षेप नहीं सारिछंती जीएसटी अर्थात किभली भाव में टैक्स को सरलीकरण करा से दिगरे मोदी सरकार निष्पत्ति नहीं एवं तापर पर भाट व्यवस्था उठीथिला देश में जीएसटी कार्यकारी होइथिला एवं से समय केंद्र सरकार एक स्वतंत्र योजना करथिले किभली भाव में राज्य माने क्षतिपूरण पाइबे कारण जीएसटी राज्य सरकार जो सब पूर्व भाट नेउथिले जीएसटी लागू फल ताहा बंद हो जाइथिला तेणु केंद्र सरकार ही ग्रहण करुथिबा जीएसटी बा टिकस रु राज्य माननकु क्षतिपूरण देउथिले एवं किछि वर्ष धरि चालिबा परे वर्तमान जीएसटी रे एक बड़ परिवर्तन करिसंती अर्थात प्रथम थर पई जीएसटी स्लैब रे परिवर्तन करा जाइछि पूर्वरु 4टी स्लैब प्रचलित हेउथिला वर्तमान 3टी स्लैब प्रचलित हेबो तेणु जे सबु द्रव्य पदार्थ सबु 28% बा 18% बड़ स्लैब रे रहिथिला ताहा वर्तमान 5% किंबा 0% अर्थात 0 जीएसटी को आसीजिवो तेणु 22 तारीख रु अनेक द्रव्य पदार्थ एवं उत्पादर दाम कमिबा पई जाउछि जहाँ भारतीय लंबा समय धरी अपेक्षा करथिले एवं केंद्र सरकार भारतीयों को एक बड़ आश्वस्ति देबा पई जाउछंती नवरात्र अर्थात आसंता 22 सेप्टेम्बर भारतीयों पई एक गुरुत्वपूर्ण दिन हेबा पई जाउछि कारण अनेक दरदाम बा अनेक द्रव्यर दाम कमिबो जहाँ साधारण खाउटी साधारण व्यक्ति साधारण लोकन को अनेक मात्रा रे आश्वस्ति देबो दरदाम किभली नियंत्रण रे आसीबो जे डिबेट बा जे चर्चा लंबा समय धरी चलीथिला ता उपरे केंद्र सरकार कार्य करिसंती एवं बड़ पदक्षेप नहीं से 1200 सीसी पर्यंत अर्थात छोट कार जदि आप किणुचंती ता मध्य सस्ता हेबा पई जाउछि अनेक जीवन रक्षाकारी औषध एभली 33टी औषध उपरे मध्य जीएसटी कमुछि जहाँ फल रे तार दाम मध्य कमिबो चमड़ा ग्रानाइट ए सबु उपरु मध्य जीएसटी हटुछि यार हेयर ऑयल एवं शैम्पू उपरे मध्य जीएसटी 5% लागिबो तेणु यार मध्य दाम आगामी समय अर्थात 22 सेप्टेम्बर रु कमिबा पई जाउछि छेना पनीर क्षीर जहाँ अत्यंत आवश्यक बा क्षीर पाउडर जहाँ आवश्यक एवं दैनंदिन लोकंक व्यवहार रे आसी थाए लोके आवश्यकता करिथांती एवं लोके ताकू किनी थांती तेणु ताकू नजर रखी केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप नैछंती ए सब उत्पाद एवं द्रव्य उपरे 0% अर्थात कोनोसी जीएसटी नियाजिबो नाही तेणु क्षीर एवं क्षीर जातीय द्रव्य बा गुंड ए सब उपरे मध्य दाम कमिबा पई जाउछि सेहि भली साधारण लोके व्यवहार करुथिबा तेल ता उपरे मध्य केंद्र सरकार जीएसटी खसाइछंती बा जीएसटी स्लैब कम करिछंती तेणु एहार मध्य आगामी समय दाम कमिबा पई जाउछि सेहि भली नूडल्स नमकीन मिनेराल वाटर एहा उपरे वर्तमान नुआ जीएसटी स्लैब अर्थात 5% जीएसटी लागू हेबो जहाँ पूर्वरु 12% बा 18% स्लैब रे रहिथिला तेणु
गोटे बड़ आश्वस्ति मिलवाई जाऊँगी गोटे आनुमानिक भाव में कहुपे जो सेवा बा पदार्थ उपर प्रायतः 18% लगुला आपन ताकू जदि 100 टंका तार दाम पड़ूला आप 118 टंका देउथिले ताहा वर्तमान प्रायतः आप 100 टंका पाइबे जदि आप 100 टंका दे किणुथिले प्रायतः वर्तमान जदि ताहा 18% रे थिला एवं 5% स्लैब को आसी जाउची ताहेले आपण प्रायतः 13 टंकार लाभ पाइबे प्रति 100 टंका उपरे तेणु ए निश्चय खाउ